डीडीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत में होने वाले कुल मौतों में से कम लगभग एक चौथाई हृदय रोग के कारण होती है और यह जोखिम धीरे धीरे बढ़ रहा है, खासकर युवा आबादी में। मोटापे और सीवीडी की घटनाओं पर बीच संबंधों में प्रकाश डालते हुए डॉक्टर के चोपड़ा, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट ने मोटापा और उच्च रक्तचाप जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम सीवीडी के मामलों के जोखिम से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। हालांकि हाल के अध्ययनों से पता चला है कि कमर हिप अनुपात भी सीवीडी की शुरुआत की एक मजबूत संकेत है। This is just to show the scenario in India. There is systolic hypertension. ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है इंडियन में ज़्यादा होता है. See the data. This is the data we published in a book. I published over 14 books, textbooks in cardiology. जो हमारी पुरानी बुक है पिछला लास्ट ईयर, उसमें हमने बताया है कि 3 times higher the blood pressure is going to be in Indians by the year 2040. हाइपरटेंशन का जो इंसिडेंस है वो डायबिटीज से 3 गुना ज़्यादा है. इतना पावरफुल है और हम मशीन से पकड़ सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन बचा सकते हैं, इंसान को हेल्दी रख सकते हैं. तो व्हाट एल्स यू वांट? दिस इज द डेटा वी शो. इंडिया इज ऑन द टॉप. सी हियर द डेटा. लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर हाई मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड इज हाई ब्लड प्रेशर. सी द डेटा हियर. लीडिंग ग्लोबल रिस्क फैक्टर इज हाई ब्लड प्रेशर. अब हार्ट अटैक का बर्डन देखिए आप, इज 10 times हायर इन इंडियंस. यंगर इंडियंस में हार्ट अटैक की क्षमता 10 गुना ज़्यादा है. 10 से 15% लोगों को हार्ट अटैक होता है. और मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखिए आप, 65% ऑफ पीपल हैव ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन इंडिया, मोस्टली इन पंजाब, इन दिल्ली एंड केरला. अभी मैं डेटा दिखाता हूँ आपको मैं. एंड मॉर्टेलिटी रेट सब जगह कम हो रही है, चाहे वो अमेरिका में हो, फिनलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए में, इंडिया में बढ़ती जा रही है. वहाँ अवेयरनेस बहुत है. It is the data to show metabolic syndrome is a major risk factor. Visceral fat is a real factor. अगर हम इंडियन हैं तो हमारी रिस्क वैसे ही बहुत ज़्यादा है जेनेटिकली, क्योंकि 10 साल पहले हमें हार्ट अटैक होता है और डिजीज हमारी एक्सटेंसिव होती है, 3 वेसल होती है, वो डिस्टल रहना, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा है. और एमर्जिंग फैक्टर भी इंडियन में ज़्यादा है. हमारे प्लाक रप्चर हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं और उससे लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है. अभी जो केके की बात आप सब लोगों के मन में होगी, जो कोलकाता वाले हैं, he had a concert. After concert he was tired, he was fatigued, he went and then he did not get up. It is sudden death was quick. There was no time, because जो हमारे प्लाक होते हैं कोरोनरी आर्टरी में, अगर वो डिसेक्ट कर जाए, रप्चर कर जाए, तो वहाँ क्लॉट बन जाता है और एकदम इरेगुलर हार्ट होता है, डेथ पे जाता है. ये पेन भी नहीं होता उसके अंदर. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कैसे हम. वी हैव सीन आवर सौरभ गांगुली हार्ट अटैक इन द एज ऑफ 46. who is the Romeo D'Souza, who was the great guy. He also had heart attack at 46. Kapil Dev at the age of 61, 62. ये तो सब लोग को जानते हैं आप, जो वो ना बता रहे हैं आपको. स्पोर्ट्स पीपल दे डाई, और ऑस्ट्रेलियन टॉप क्रिकेटर sudden death. So I think these are happening, and it's a matter of great concern. So we have to start thinking very seriously by the motion and movement created by Sudeep and by Dr. Goyal, and I'm sure Dr. Rawat is also part of it. This is a real movement, and I'm very happy to participate with them. High triglycerides, high bad fat, good cholesterol is less, bad cholesterol is high, sugar is high, inflammatory markers are high, और सेंट्रल ओबेसिटी होता है. ये सारे कंपोनेंट हैं. हमने सारी स्टडी करी. जो नेक्स्ट फेज में हमारी स्टडी थी, हमने सीआरपी मेजर किया. सबका सीआरपी हाई था, इंटरल्यूकिन हाई हो जाते हैं, प्रोथ्रोम्बोटिक होता है. अब न्यू भी है तो कोविड ही था. कोविड वायरस वैसे ही प्रोथ्रोम्बोटिक है, प्रो इन्फ्लेमेटरी है, प्रो इम्यूनोजेनिक है. एंड इफ यू हैव मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऑन द टॉप ऑफ इट, वी आर एट अ वेरी हाई रिस्क फैक्टर. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हमें ओबीस तो होना ही नहीं है, क्योंकि पहले ही वायरस जो है वो ठीक नहीं है. तो वी शुड वर्क ऑन कि हमें ओमेगा 3 का एसिड का कंटेंट 8% से ज़्यादा होना चाहिए. इंडिया में सबसे कम है पूरे वर्ल्ड के अंदर. यू कैन सी रेड वन. अब ये देखिए आप, हम ये खा रहे हैं आजकल, साथ में दारू की बोतल, ग्लास है दारू का, और फिर ये फ्रेंच फ्राइज, और फिर चटनी देखिए पूरा भरा हुआ कप विद दी फ्रेंच फ्राइज एंड विद टोमेटो सॉस.
अब क्या नहीं होगा, तो ये प्लास्टिक कैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कौन देखेंगे आप। तो हमें ये सब काम करना है, लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइजेशन और स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। और स्क्रीनिंग के बाद में एडवांस लैब चाहिए, एडवांस लैब के बाद वेलनेस सेंटर। वही मैंने प्रदीप से बात करी थी और डॉक्टर गोयल से बात करी, आपने फर्स्ट स्टेप करिए या वेलनेस किया है, नाउ यू शुड गो फॉर स्क्रीनिंग मशीन टू गो एवरीवेयर इन एवरी कॉर्पोरेट, एवरी स्कूल, every government and non-government organization, then you create advanced labs. तो इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, जो भी काम है उसको प्यार से करिए। तो ये समझाना पड़ता है। मैंने एक वर्कशॉप करी थी चिन्मय मिशन में ऑन एंगर मैनेजमेंट, हाउसफुल, more than 4,000 people came. I was surprised, so many angry people. क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है, माइंड मैनेजमेंट नहीं है। तो माइंड मैनेजमेंट भी हम इस मशीन से सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं उसकी बात हम अभी करेंगे। फिर like people are all the time in fear, insecurity, competition, ego and arrogance and prejudice, then vengeance, vindictiveness, hostility, frustration, suppression, depression, that all give rise to hypertension, heart attacks, and that changes the metabolism. ये मशीन जो है मेटाबॉलिज्म की बात कर रही है और मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्ब। Inadequacy of sleep, very important. People who are working on the call centers, they don't sleep at all. And I see a lot of people are very anxious. They come to me, young girls and boys. So we must have adequate sleep, which is normal. They have blood pressure and fluctuation. There is seasonal variation and anger. Early diagnosis is the need of the hour. This is the data from the world which we are seeing. India is the sitting on a volcano so far as metabolic syndrome is concerned. हम एक वॉल्केनो पे हैं और हाइपरटेंशन का प्रेवलेंस यहाँ भी रिकॉर्डेड है लेटेस्ट 23 to 40%। रूरल एरियाज में कम है बिकॉज दे फॉलो द लॉज ऑफ नेचर, दे आर नॉट स्ट्रेस्ड लाइक यू एंड मी। वी शुड लर्न हाउ टू कोप विद द स्ट्रेस। स्ट्रेस तो बहुत जरूरी है। डॉक्टर गोयल आए ऑल द वे फ्रॉम यूएसए, तो स्ट्रेस लेके आए हो, बट ही नोज हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। सुदीप इज हियर, he called me 3 times last time because he wanted everything to go very smoothly. In the morning he called me 2-3 times. He wanted everything should go smoothly. अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करने अच्छी तरह कोप कर रहे हैं तो we are going to have use stress and not distress. It's very important. This is just to show the scenario in India. Yes, systolic hypertension. ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है इंडियन में ज़्यादा होता है। See the data. This is the data we published in a book. I published about 14 books, textbooks in cardiology. जो हमारी पुरानी बुक है पिछला लास्ट ईयर, उसमें हमने बताया है कि 3 times higher the blood pressure is going to be in Indians by the year 2040. हाइपरटेंशन का जो इंसिडेंस है वो डायबिटीज से 3 गुना ज़्यादा है। इतना पावरफुल है और हम मशीन से पकड़ सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन बचा सकते हैं, इंसान को हेल्दी रख सकते हैं। तो व्हाट एल्स इज दिस इज द डेटा वी शो इंडिया इज ऑन द टॉप। See here the data, leading risk factor for high mortality worldwide is high blood pressure. See the data here, leading global risk factor is high blood pressure. अब हार्ट अटैक का बर्डन देखिए आप, is 10 times higher in Indians. Younger Indians में हार्ट अटैक की क्षमता 10 गुना ज़्यादा है। 10 से 15% लोगों को हार्ट अटैक होता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखिए आप, 65% of people have a metabolic syndrome in India. मोस्टली पंजाब, इन दिल्ली एंड केरला। अभी मैं डेटा दिखाता हूँ आपको। मैं मॉर्टेलिटी रेट सब जगह कम हो रही है, चाहे वो अमेरिका में हो, फिनलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए में, इंडिया में बढ़ती जा रही है। वहाँ अवेयरनेस बहुत है। इट इज द डेटा टू शो मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज अ मेजर रिस्क फैक्टर। विजिबल फैट इज अ रियल फैक्टर। अगर हम इंडियन हैं तो हमारी रिस्क वैसे ही बहुत ज़्यादा है जेनेटिकली, क्योंकि 10 साल पहले हमें हार्ट अटैक होता है और डिजीज हमारी एक्सटेंसिव होती है, 3 वेसल होती है, वो डिस्टल रन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा है और एमर्जिंग फैक्टर भी इंडियन में ज़्यादा है। हमारे प्लाक रप्चर हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं और उससे लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। अभी जो केके की बात आप सब लोगों के मन में होगी, जो कोलकाता वाले हैं, he had a concert, after concert he was tired, he was fatigued, he went and then he did not get up. It is sudden death, there is no time, because जो हमारे प्लाक होते हैं कोरोनरी आर्टरी में
अगर वो डिसेक्ट कर जाए, रप्चर कर जाए, तो वहाँ क्लॉट बन जाता है और एकदम इरेगुलर हार्ट होता है, डेथ पे जाता है। ये पेन भी नहीं होता उसके अंदर। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कैसे हाउ वी हैव सीन आवर सौरभ गांगुली हार्ट अटैक इन द एज ऑफ 46, who is the Romeo D'Souza, who was the great guy. He also had heart attack at 46. Kapil Dev at the age of 61, 62. ये तो सब लोग को जानते हैं आप, जो वो ना बता रहे हैं आपको। स्पोर्ट्स पीपल दे डाई, और ऑस्ट्रेलियन टॉप क्रिकेटर sudden death. So I think these are happening, and it's a matter of great concern. So we have to start thinking very seriously by the motion and movement created by Sudeep and by Dr. Goyal, and I'm sure Dr. Rawat is also part of it. This is a real movement, and I'm very happy to participate with them. High triglycerides, high bad fat, good cholesterol is less, bad cholesterol is high, sugar is high, inflammatory markers are high, और सेंट्रल ओबेसिटी होता है। ये सारे कंपोनेंट हैं, हमने सारी स्टडी करी। जो नेक्स्ट फेज में हमारी स्टडी थी, हमने सीआरपी मेजर किया, सबका सीआरपी हाई था, इंटरल्यूकिन हाई हो जाते हैं, प्रोथ्रोम्बोटिक होता है। अब न्यू में है तो कोविड ही रहा, कोविड वायरस वैसे ही प्रोथ्रोम्बोटिक है, प्रो इन्फ्लेमेटरी है, प्रो इम्यूनोजेनिक है, एंड इफ यू हैव मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऑन द टॉप ऑफ इट, वी आर एट अ वेरी हाई रिस्क फैक्टर। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हमें ओबीस तो होना ही नहीं है, क्योंकि पहले ही वायरस जो है वो ठीक नहीं है। तो वी शुड वर्क ऑन इट कि हमें ओमेगा 3 का एसिड का कंटेंट 8% से ज़्यादा होना चाहिए। इंडिया में सबसे कम है पूरे वर्ल्ड के अंदर। यू कैन सी रेड वन। अब ये देखिए आप, हम ये खा रहे हैं आजकल, साथ में दारू की बोतल, ग्लास है दारू का, और फिर ये फ्रेंच फ्राइज, और फिर चटनी देखिए पूरा भरा हुआ कप विद दी फ्रेंच फ्राइज एंड विद टोमेटो सॉस। अब क्या नहीं होगा, और ये क्लासिक केस है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, तो हम देखेंगे आप। तो हमें ये सब काम करना है, लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइजेशन और स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। और स्क्रीनिंग के बाद में एडवांस लैब चाहिए, एडवांस लैब के बाद वेलनेस सेंटर। वही मैंने सलीब से बात करी थी और डॉक्टर गोयल से बात करी। आपने फर्स्ट स्टेप करिए या वेलनेस किया है, now you should go for screening machine to go everywhere, in every corporate, every school, every government and non-government organization. Then you create advanced labs and giving the facts to us. Though it is very, very alarming, but yes, there is a way out. What Dr. Chopra was also trying to communicate, that it's just a matter of changing the mindset and moving towards preventive thinking. Thank you so much. देखिए, Dr. Chopra has given us a very good informative piece of information. Very, very well agreed. देखिए, यहाँ पर 40 to 50 years और maybe younger, maybe older, you know, उस एज ग्रुप में हैं। Mind your mind, बहुत अच्छी बात कही। The 12 S's that he has given. Mind your mind. Stress is a very important factor that he has said. Mind your mind because mind matters a lot. I liked it because बाद में होता है, पहले आप सोचते हो and it goes to the heart. So this is a very important thing. चिंता चिता की जड़ है. We all agree with that, don't we? I want you all to be interactive. वहाँ पे बैठ के सोना नहीं है, लिखना नहीं है. You have to interact with me, okay? See, it's very important. ये IHL link जो बनाई है डॉक्टर गोयल ने, we are very thankful. I agree on this information that prevention is definitely better than cure. And हमारी इंडिया, again, I will say, we cannot afford the interventions. So हमारा जो स्थान है वो यहाँ पर है. And prevention we are talking about here. UK, as Swadeep has said that I have worked in UK. Yes, I have worked in UK for 17 years. वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चों को सिखाया जाता है स्कूलों में eat 5 pieces of fresh fruit and vegetables. 5 गिन के. जैसा आदि सर ने आपको बताया, omega-3 fatty acids, omega-3 fatty acids and all the other जो हम बड़ी-बड़ी बातें, linoleic acid, this acid, all the good food in our diet जो हमारे डाइट में नहीं है, वो हमें लेना कहाँ से है?
हमें अच्छी अच्छी चीजें खानी है, हमें अवॉइड करना है, because as he has already mentioned, we are sitting on an emotional time bomb. So apply the 12 S's that Dr. Chopra has mentioned earlier. First of all, I am in the presence of esteemed presence of Dr. H.K. Chopra and Dr. Sonia Rawat. So I am going to follow what exactly they introduced to us, the factors, the risk factors, and the reasons why Indian health is the people should think about their health. We as India Health Team thought of three factors. First, we wanted everybody to be educated about health. They need to understand what impacts, how metabolic parameters, how awareness of health is important for their life. Then we wanted to make them aware of where they stand in their own health factors. What is their standing, whether they are healthy, they are sick, or they are somewhere in between. Once you are educated how these factors impact health and the prevalence of the diseases, you got awareness of yourself, where you stand in that particular spectrum, then and then only you can get facilitation. So in the facilitation, as Dr. Chopra and Dr. Rawat said, you may be able to take lifestyle changes, you may be able to take some steps towards your the food habits, or you might need to go and take medicine. But you need to be first aware of yourself, and then before awareness, you need to be educated that how these things are important for your own quality of life. So here we are presenting our own study. This study is basically the data which has been collected from some of our HPOTs. HPOT is a health pod, which actually is a non-invasive way to in 3 to 5 minutes, an individual can sit on it and can capture their blood pressure, their body mass composition. Composition means bone density, mineral content, fat content, visceral fat, waist heat ratio, and also we can do ECG, 6-lead ECG. That is a diagnostic factor that needs 8%. So that's 67%, to small sample of 23%, 141 female are actually the highest risk of getting chronically sick. So this is what we are trying to say, that once you are aware of yourself, now you have to take an action before it is becoming too late. And then action is not difficult. Go walk, check your food habits, and once you have checked your food habits, taken some action, go back and measure again. And that will tell you that there is an impact. And that is what we are trying to do with India Health Link. We want to put these devices in every nook and corner in the in 2 blocks of you where you reside, where you work, so you can go and check yourself. Just not the weight. You should also check these metabolic parameters, and that will make India wealthy, and that will make India healthy, and that mission of